Assalamualaikum everyone. Welcome to the second episode of the Incurable Diseases. I'm your host Amna Asif, and today I'll be talking about for this podcast. I'll be talking about the second incurable disease, which is known as celiac disease. What celiac disease is, we'll get to know by our guest how she's going through, when did she get diagnosed, and how she'll managing up or कब कैसे. So let's get further on. So for that, I have a guest named Abeera. So let's talk to her about it. Hi Abeera, how are you? You. I'm good. How are you? I'm good too. So what's up? What's going on? पढ़ाई था कुछ पढ़ाई क्या पढ़ रहे हो? First year commerce. Commerce. So commerce में interest. A little bit like business, yeah, something I see. I don't know. Oh, so like introduce yourself. Hi, my name's Abeera. I am 16 and I have celiac disease. I was diagnosed in December 2022, and how I found out about this. First, tell me what is celiac disease. Sorry, celiac disease is basically it's an intolerance. It's a gluten intolerance. Gluten is wheat, maida, barley, rye. So it's an intolerance when your small intestine it like cannot handle gluten and आपकी वो like ना पूरी खराब हो जाती है. So you आपकी किस there's many like signs towards it and आपको आगे क्या होता है कि अगर आप कुछ खा लो तो मेरा there's different for different people. मेरा क्या होता है कि if I accidentally have gluten so I get nausea, I get vomiting, diarrhea ऐसे करके I have I think once gotten it in the past year December. तो diagnose कैसे हुआ मतलब Diagnosed. Well, actually, I also have diabetes, type 1. So there's like this thing कि if you have diabetes or if diabetes runs in your family, so there's a higher chance of you getting celiac disease. So आपके family में है Yes. diabetes. Yes. My house मेरे घर में नहीं है, मेरे घर में खाली मुझे है, but my family, my mom's side, my dad's side, they both have it. Type 1, type 2 दोनों. Oh my god. So मुझे type 1 है. So what happened when I was diagnosed with diabetes on the second day when I was admitted in the hospital, they like बहुत blood tests हो रहे थे मेरे कि हर चीज़ का blood test. So the doctor came in and they were like आपके blood test में gluten allergy का detect हुई है. And I was like wait ये क्या हुआ है? तुम्हें पता था gluten allergy क्या होती है? Well, no, not really. I knew what allergy meant. I was not sure, but like gluten exactly क्या होता है. So they were like, and I was like, wait. And then they explained it कि ये you can't have this, you can't. I was like, whoa, I just got diabetes. ये क्या हो गया मुझे? तो फिर उसके बाद this like went on for like 1.5 months. October I got diagnosed with diabetes and December celiac. So for 2 months, my 2 doctors were like arguing on like मुझे है कि नहीं है. My diabetes doctor and my celiac doctor. So we decided the best option was क्योंकि the thing is in blood test ना sure नहीं होता कि आपको है कि नहीं है. वो कभी दिखाता sometimes it's like wrong. My doctor said कि आप endoscopy करवा लें. Endoscopy होती है कि आपके ना through your mouth एक पाइप जाती है उसमें कैमरा लगा होता है and they take a piece out of your intestine and they test it out and You're like camera की आंख आपको देख रही है. So I was like really scared and my parents were scared because endoscopy like क्या भाई आपके अंदर पाइप जा रही है and it's also like very expensive. क्या आपको anesthesia पे होता है या you had an option anesthesia का. I always got it because I was too scared. So we got many opinions. हम लोग 3-4 डॉक्टर के पास गए थे इसके बारे में कि हम करें नहीं करें. All of them were like कर लो Confirmation आ इन्फॉर्मेशन का नेसेसरी क्या बता आपको लाइक हो आपने नहीं किया फिर आप बाद में प्रॉब्लम्स हो जाए हमने करवा ली. आई थिंक वी वर कंफर्म्ड बात कि हमने करनी है इन नवंबर एंड देन उस देर तक टिल December 16 आई वाज टोल्ड कि आई शुड बी ऑन अ कंप्लीट ग्लूटेन डाइट. मुझे हाँ मैं हर खाने में खाना लाइक नॉर्मल डाइट बेसिकली ताकि आपको जो भी हो तो पता चले मैं बाद में. सो ऑन December 16 आई हैड माई एंडोस्कोपी एंड उन्होंने जैसे ही कैमरा डाला दिस सॉ माई स्टमक एंड दे वर लाइक इसको तो है. Oh my god. अच्छा द थिंग इज कि ना मैं चाय पीती हूँ हर शाम. आई हैव ब्रेड टोस्ट बिस्किट्स. उस दिन आई केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल चाय एंड आई वाज लाइक अबाउट टू डंक द बिस्किट चाय के अंदर. भाई बोलता है ये क्यों खा रही हो तुम? क्यों तुम्हें पता नहीं तुम्हें एलर्जी हो गई? मैंने कहा ये क्या हुआ? इट्स लाइक आई वाज सो न्यू टू डायबिटीज. डायबिटीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं आपके पास कि ये कम खाओ उसका कंट्रोल. सो आई वाज लाइक ऑलरेडी लाइक पागल उसमें एंड आई वाज लाइक ये आप पे स्वीट टूथ होगी ना. आई वाज यस इनक्रेडिबल या ह्यूज स्वीट टूथ. मैं हर खाने का कुछ मीठा खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए. तो लाइक मैं चीनी ऐसे मुँह में खाती थी और मैं चाय में 5 चम्मच चीनी डालती थी बिफोर डायबिटीज. नॉट उससे पहले तो लाइक 1-2 चम्मच लाइक राइट बिफोर डायग्नोसिस आई यूज्ड टू टेक 5 चम्मच. सो लाइक या दैट्स हाउ आई गॉट डायग्नोस्ड. तो उसके बाद लाइफ कैसी रही? Horrible. I used to cry, literally cry
every single time I saw something that I missed. For example, घर पे ये मेरे family members eating something. For example, pasta कर लो. They're eating pasta and I'm like, यार, I can't have that. I was like so sad. I used to cry over this. I remember like so much, and I could not have biscuits. A few chips, because some chips के होता है कि you know it contains wheat contains. But I was like, why? Like chips is aloo. Like मसाला नहीं होता है well. And then there's also many restaurants like I can't have burgers, pizzas, pastas, biscuits, pastries, cakes, brownies, cookies. चिप्स में क्यों होता है? जैसे आपने मेंशन किया आलू में फ्री। यार, exactly that was my first thought. कौन से चिप्स हैं जिसमें आलू भी और Mostly Curly's, Snack City की Curly's. All of their products have them. तो आप खाती क्या हो? मैं हवा. पता चले कि हवा में भी ग्लूटेन है। Okay, बस please. No, like seriously, people तंग करते हैं मुझे कि पानी पी रहे, पानी ग्लूटेन है. I'm like भाई. तो फिर मतलब आपकी फैमिली उसको कैसे लेके चलती है? Well, my mama, we did a lot of research about this. कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते. This like went on for like weeks, months. It's still sometimes going on. ये इसमें कुछ है कि नहीं है ऐसे करके. So mama, she like collects many different atas. I don't know, corn, rice, what else. So why don't you know? Great question. इतने ज़्यादा आटे हैं, like hard to remember क्या चीज़ें हैं यार. तो होना चाहिए. कभी आपको खुद से बनाना पड़े तो फिर क्या करोगी? वो मैं कर लूँगी. फिर पता है नहीं कर लूँगी. So mama like mixes all of these atas and उन सारा आटा से मेरी रोटी बनती है घर पे. And like tastes bitter but जैसे बताया 22 में हुआ डायग्नोस, अब तो आदत 24 पे. या अभी तो like मुझे 2 साल होने वाले हैं माशाल्लाह इस साल दिसंबर में. So like yeah, mama makes that stuff and like डब्बे भी आते हैं. That's for like मम्मा जो बनाती है वो बनाती है मेरी रोटी के लिए. For baking purposes उसके अलग से डब्बे आते हैं. By the way, gluten diet is like hell expensive. आपके different आटे, आपके think क्या चीज़ें होती हैं. तो आपने डायबिटीज से बताया. डायबिटीज दोनों मिला के extra expensive. Like diabetes, you have your insulin, you have your pens, you have your syringes. I don't know what else. So celiac, yeah, उसके different डब्बे आते हैं. मामा has bought those डब्बे, तो उसकी बेकिंग बनती है. तो उसके बाद क्या मतलब इम्पैक्ट क्या लाइफ में पड़ा? बहुत ज्यादा. Number one, sadness. No, seriously, because like भाई पाकिस्तान में रह रहे हो. पाकिस्तान में ना अच्छा ग्लूटेन का इतना है नहीं कि एलर्जी भी होती है. बहुत कम है. बहुत कम चीज़ें देखो कि प्रोडक्ट्स में लिखा हो कि ग्लूटेन फ्री चीज़ें. तो इट वाज लाइक वेरी सैड. मेरा इम्पैक्ट बहुत ह्यूज इम्पैक्ट था कि लाइक भाई मैं इतना मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता. वेरी आई स्वेयर आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट एंड आई स्टिल समटाइम्स आई गेट लाइक वेरी सैड एंड अपसेट. तो लाइक ना मुझे बहुत हो गया मैं क्या खाऊं भाई. कि उस लाइक मेन चीज़ रोटी हर कोई रोटी खाता है. 3 वक्त की रोटी बंद हो गई मेरी. मैं क्या खाऊं? तो सब्स्टिट्यूट तो रोटी है ना. जी सबसे उससे पहले बिफोर वी फाउंड आउट एक था चावल. द थिंग इज नॉट अलाउड व्हाइट चावल शुगर बट लाइक ब्राउन चावल मुझे पसंद नहीं इतने. Like मैं so अब हम मुझे था मैं क्या खाऊं. I had to like research about every single product I eat. हर जैसे लिया मैंने ये चिप्स का पैकेट है. रीड क्या इसमें है. समटाइम्स होते हैं कि ना उस पर लिखा नहीं होता कंटेनिंग होता है ना एलर्जी कंटेन लिखा नहीं होता व्हीट या समथिंग या ग्लूटेन का. अंदर होता है कि मॉल्ट लिखा हुआ है. अब मॉल्ट इज ऑल्सो wheat, barley, rye and malt. It's all like gluten containing. I'm like यार what is this मजाक. लिखा हुआ है लीजिए नहीं लिखा हुआ ग्लूटेन एलर्जी. तो बड़ा होता है. I remember every morning before school I used to have Milo. And I was after I found out like Milo is basically like malt की drink. Oh, I thought sugar से related. I don't care about sugar. When it's gluten free I can have it. So I was like ये तो पूरा malt है भाई. मैं दूध नहीं पीऊँ. दूध नहीं पाउडर है वो तो पाउडर है ना वो तो. I was like really sad about that too. It's like a huge impact भाई. Like आपकी सारी चीज़ें कट आउट होती हैं आपके खाने से. Especially fast foods. So basically burgers, pizzas, bread. उसको हटा के एक देसी खाने में मसाले. जैसे एक शान मसाला उसके हर शान मसाले में लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है एक कंटेन्स ग्लूटेन. अब यार काफ़ी लोग बनाते हैं बिरयानी निहारी पता नहीं क्या निहारी को थिकन करने के लिए देयर इज मैदा यूज्ड. आई कैंट हैव दैट. लाइक यू नो तो कोई सब्स्टिट्यूट मतलब जगह रेस्टोरेंट्स कुछ तो होंगे ना. कोई तो फूड प्रोवाइड करता होगा थोड़ी मतलब नो नॉट रियली. रिसेंटली आई फाउंड आउट दिस रेस्टोरेंट कीकीज कैफे. आई एम गोइंग देयर दिस सैटरडे. सो एक्साइटेड. वहाँ पे आई फाउंड आउट कि हाफ ऑफ देयर मेन्यू आई थिंक 95% ऑफ देयर मेन्यू 90% ऑफ देयर मेन्यू इज ग्लूटेन फ्री. उनके मेन्यू पर एक लिखा हुआ है कि ये आपके हैं एंड साइड पे लिखा हुआ है ग्लूटेन फ्री.
and or dairy free, I don't know, something. कुछ तो सब्स्टिट्यूट छोटे मोटे तो स्टॉल्स होंगे जो मतलब प्रोवाइड, No, there's वो ग्लूटेन फ्री के नाम से नहीं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे दैट इज stalls. For example, एक fries का stall है. So fries में ना they use मैदा to make them crispy. I have to like ask them कि आप क्या use करते हैं. So I asked this one guy and he's like they use cornstarch. They didn't use मैदा. I'm like yeah. But I had to ask it confirm कि like उनका oil same है. They don't have different fryer and they were like no उनका different fryer भी है. I'm like जान में जान है. and I got so happy. So like whenever like come and over there, I always get those fries and all. So that would be a lucky day for you. Yeah, कि उस दिन fries खा लिए मैंने. और दोस्तों के साथ अराउंड कैसे चलता है? You know, my friends are still like, you know, not really completely assured about it. कि like क्या, तो they were like तुम ये भी नहीं खा सकती, अच्छा इसमें भी है, अरे तुम ये भी नहीं कर सकती. I'm like यार तंग भी करते होंगे. no, like seriously. I'm like हाँ ये देखो मैं तो ये खा रही हूँ. I'm like तो like, उस दिन I had a party class में, हमने ऐसी की थी between my friends and they brought some stuff. So one of my friends got biryani, I got those, and one of my other friends got fries, normal fries, nothing covered, alhamdulillah. So I ate those. The rest of them were like eating cake, pasta, sandwiches, chips. I was like तो उन चिप्स में भी ग्लूटेन था? yeah. Oops. I was assured कि नहीं था, but I had to like, you know, reassure myself कि read करना, and I read it and I was like contains gluten. Oopsie days. Oopsie daisies. तो बहुत पे कैसे लेके चलती हो घर का खाना. ये मतलब क्यों नहीं हो सकता? No, it's no cure. You can control, not even control well. Because diet आपका diet पे base है ये कि आप diet आप different कर लो, आपको कुछ होएगा नहीं फिर. मैंने सुना था मतलब एक कोई कर रहे थे वो क्योर हो जाता है मतलब. No, there's seriously no cure. आप for example आप gluten free diet पे हो 5 साल तक हो, आपने gluten खा लिया, you're वो तो फिर एक बॉडी है, जब आपकी एक्सेप्ट कर लिया ग्लूटेन फ्री, फिर एकदम से जब दूसरी डाइट पे आओगे नहीं no नहीं मसले उसका नहीं है. अब you can there is no cure for this. आपकी body will not accept it. अगर है ना कि आपको बस है allergy, your body will be like no thank you, I will not accept this. आई होप कोई ना कोई क्योर निकल. इंशाल्लाह प्लीज नो सीरियसली. पता है मेरा वैसे फ्यूचर प्लान है, शादी होगी इंशाल्लाह. तो आई एम गोना गो टू इटली. वाइटली इटली की कम्युनिटी इज मोस्टली ग्लूटेन फ्री. उनके वहाँ पे हर जो भी पैदा होता है बच्चा, हर किसी का टेस्ट होते हैं वहाँ पे कि आपकी एलर्जी है कि नहीं. तो वहाँ पे देयर इज मेनी थिंग्स लाइक पास्तास, आइसक्रीम्स. यू नो आइसक्रीम्स में भी होता है ग्लूटेन. आइसक्रीम. Exactly. Yeah, आइसक्रीम इज दूध. Why? So yeah, so वहाँ पे there's pizzas, pastas and all that's fast food stuff and वगैरह. So I'm like I'm gonna go there inshallah one day. नाइस. व्हाट आर योर मतलब उनके लिए जिनको अभी रिसेंटली ग्लूटेन, क्या एडवाइस देना चाहोगे? Go on the internet, literally. यहाँ पे कराची में there's like small home bakeries. वहाँ से usually order a lot of stuff, pizzas या bread. तो go on the internet. आप search करो places near you या ये जगह यहाँ पे safe है आपके लिए, Celiac safe places या gluten-free places. Go on the internet. आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. जब मुझे हुआ था my parents were like सबसे पहले इंटरनेट पे गए कि लाइक कहाँ जाएं हम लोग, क्या जगह ले. सो दे फाउंड दिस शॉप जहाँ पे मैदा दे सेल मैदा वहाँ पे ग्लूटेन-फ्री फ्लावर. एंड आई स्टिल यूज इट टू दिस डे कि आई यूज इट फॉर बेकिंग. एंड दे फाउंड मेनी डिफरेंट उस तरह बेकरीज, होम बेकरीज भी उस तरह. वहाँ से भी ऑर्डर कर चुकी हूँ मैं, रस्क ऑर्डर कर चुकी हूँ मैं, वहाँ से ब्रेड ऑर्डर कर चुकी हूँ. आई स्टिल हैव ब्रेड फ्रॉम देयर. एंड ये सारी या आप इंटरनेट पे जाओ, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे, या आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, या इफ़ यू हैव समवन हु इज ऑन ग्लूटेन फ्री डाइट ऑप्शन की तरफ से या उनको नेसेसरी है तो वैसे भी करके पूछ सकते हैं आप. तो फिर आई होप कुछ हो जाए. The best thing is find alternatives. ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं फिर उसके? या कि हो जाए मैदे का कॉर्नस्टार्च, पानी का पानी. ऑल्टरनेटिव क्या यूज करते हो जब रोटी नहीं खाती? रोटी के ऑल्टरनेटिव Almond flour, rice flour ऐसे करके. I usually use rice flour and cornstarch का mixture है with xanthan gum and all. तो पिज्जा वगैरह भी डिफरेंट, पास्ता भी Yeah. You know the worst thing about this that your gluten-free मैदा is hella crumbly. आप उठाओ टूट जाएगा. No, cause like मेरा अच्छा my mom makes my पराठा. मैं लेकर जाती हूँ फॉर लंच, यू नो टू कॉलेज एंड ऑल. खोला, एक पीस टूटा. ये खोला, बाइट कर रही हूँ, यहाँ से गिर रहा है सारा. पूरी शर्ट, लिटरली माय पूरी शर्ट इज ऑल क्रम्बल्ड अप. लाइक अभी तो ये कहाँ गया सारा. तो उसके साथ जॉयफुल भी करो ना, एडवेंचरस. सारा सैंड थिंग क्या वाटरफॉल हो रही है मेरी. लाइक हर चीज़ टूट जाती है. लाइक मेरा केक इज वेरी क्रम्बली एंड ऑल. माय टोस्ट भी आप तोड़ो, आपके क्रम्स साइड निकल रहे हैं. नॉर्मल तो क्रम्स तो होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आप इतने क्रम्स लाइक भाई स्ट्रक्चर में रहो आप अपने. So I guess that would be it for today's podcast. I hope आपका कुछ ना कुछ क्योर निकल आए. Inshallah. Thank you so much for coming in the podcast and thank you so much for giving us so much information. Thank you. And I hope we meet soon with
another disease, नहीं, not with another disease, sorry, like helping, मतलब आप आओ अगली दफा पॉडकास्ट में और आप क्योर हो गई हो, I hope so. Yeah, आप Inshallah. किसी आपको Incurable disease being cured. Part yeah, 2. yeah, part 2. Totally, Season 2. Season 2, basically. Thank So, you. thank you so much for coming. That would be it for today's podcast. I hope you all like, और अगर आप लोग को कुछ भी information वगैरह चाहिए होगी तो comment down below. I'll try my best to help you out. मैं इनका पेज है सीलियक डिजीज का, अगर वो अभी तक चल रहा है तो I have no idea. तो मैं वो नीचे टैग कर दूंगी, तो उसमें कुछ ना कुछ तो अपडेट आ जाए, तो ईमेल वगैरह कुछ दे दूंगी कि Yeah, you can आप contact contact कर me. लें. I'll give you some tips and email tricks. that would be it. Stay Stay healthy. happy, stay safe, and आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, दुआओं में हम सबको याद रखेगा. And that would be it for today's podcast. Allah Hafiz.